हाय एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्विटर में पूछा गया एक प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और एक नए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज रोलिंग एवरेजेस। अपन चेक करेंगे हाउ वी कैन फाइंड अ रोलिंग एवरेज। ओके, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रोलिंग एवरेज। ओके, सो हियर यू कुड सी दैट एक तारीख को एक यूजर ने दो पोस्ट किए, ओके, एंड 2 तारीख को द सेम यूजर हैव पोस्टेड वन पोस्ट. So the rolling average will be total number of sum of previous all posts divided by total number of sum of days. Okay, so basically 2 दिन में total 3 पोस्ट किए and total days will be 2, so the average will be 1.5. Similarly 3 तारीख को उसने 3 पोस्ट किए, so the total sum of posts will be 6 and the number of days is 3, so the rolling average will be 2.k. So basically the number of posts के साथ साथ जिस number of days भी चेंज होंगे, so that is how we will find the rolling average. Okay, so let's see how we are going to achieve that. Okay, so let's select star from tweets. So we have the tweet table and I'm selecting everything from the tweet table. Okay, and अगर मुझे एक rolling average चाहिए तो rolling average के लिए we will be using the aggregate function called average. So अपन एक aggregate function use कर रहे हैं, that is average. To use that average, उस average को rolling function बनाने के लिए basically what we are doing, let's suppose we have a tweet count. Okay, tweet underscore, actually मुझे वो rolling average कैसे मिल रहा है, विंडोज फंक्शन की तरह यूज मिल रहा है, हर एक डिफरेंट रो के लिए एक अलग एवरेज मिल रहा है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द window function over clause here and partition it by the user id. Okay, partition it by the user id and order by tweet date. If I run this particular code, you could see that मुझे rolling average तो मिल रहा है, I'm getting all the rolling average. Okay, this is what we want actually. But if you check the question, we want to find the rolling average based on 3 previous days. Okay, 3 rolling average चाहिए. Basically क्या करना है कि लास्ट 3 डेज का एवरेज निकाल के अपन को उसका रोलिंग एवरेज निकालना. ओके, सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंडीशन. तो पहले दिन तो उसके पास एक पोस्ट है, सो इट विल डिवाइड बाय 1 ओनली. ओके, दूसरे दिन इट हैज ओनली 2 पोस्ट, so it got divided by 2, but after third day what it will take the last three posts and divided by 3 again. It will take the last 3 posts and divided by 3. So this is how we will find the rolling average for last 3 days. Okay, so for that what we will do, we will add another condition. So there is another condition we are adding, that is basically अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक ऑफसेट या अपन एक लिमिट लगा रहे हैं. ओके, अपन क्या लिमिट लगा रहे हैं कि मुझे आज से 3 दिन पहले तक का ही एवरेज निकाल के दो. ओके, so what we are doing, we are putting some condition or over clause help us to provide that condition, so we can put that condition using the between and we are telling कि आज से 2 दिन पहले, basically to preceding and current row. बेसिकली आज से करंट रो विल बी आज से 3 दिन पहले का जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको सम करके मुझे रोलिंग एवरेज दो. इफ आई रन दिस पर्टिकुलर कोड, यू कुड सी रोज, वी आर पुटिंग अ कंडीशन कॉल्ड, वी आर पुटिंग अ कंडीशन जहां पे वी आर पुटिंग रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो. 2 प्रीसीडिंग से मतलब है आज से 2 दिन, आज से 3 दिन पहले के सारे रिकॉर्ड्स और आज का रिकॉर्ड मिला के अपन को उस रोलिंग एवरेज निकालना है. This is how we are going to achieve that. Okay, and in this particular we have to round it. So अपन round करने के लिए what we will do, we will use the round keyword and we are rounding it using 2 decimal places. Okay, so I have rounded it, and if I run the code, you could see that this is being rounded. Okay, and the name of this particular, और इसका नेम अपन पुट करने वाले हैं रोलिंग अंडरस्कोर एवरेज. ओके, सो वी विल पुट द नेम रोलिंग अंडरस्कोर एवरेज and here we only have to select the user id, tweet date and rolling id. Okay, so I am selecting here from user id, tweet date, comma this rolling average. Okay, if I run this code, you could see that I am getting everything related to